Good afternoon, everyone. My future chartered accountants, how are you? Hopefully, you get revised everything. जितना भी हमने पढ़ा सब रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने. एक क्वेरी है मिस स्वाति मिश्रा की. Sir, I have October 20 edition. Can I prepare with the October 20 edition for May 23? Answer is no. Please download the updated edition because there are some changes in the law in Companies Act LLP. तो प्लीज इसको डाउनलोड करिए, देन आप स्टडी करिए. गुड आफ्टरनून तमन्ना, आशुतोष, अनन्या, सौम्य रंजन. गुड आफ्टरनून प्रतिभा, शीरी. गुड आफ्टरनून वेंकट लक्ष्मी. गुड आफ्टरनून कशिश, राज विश्वास, प्रमोद, अक्षता, मनीष. गुड आफ्टरनून एवरीवन. और कोई गुड आफ्टरनून? सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहले रिवीजन करते हैं, देन अपन टेस्ट स्टार्ट करते हैं. अभी और गई गुड आफ्टरनून आ गई भाई. पुरंजय, श्रुति, रिया. गुड आफ्टरनून. श्रेया, अंकिता, यश, नजात, आसिफ पंजाबी. गुड आफ्टरनून बेटे. तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन, then we will have the test. Good afternoon Aryan, Haneen, Priyanka, Gaurav, Riya. Good afternoon Nikita, Ashwini, Bhumi, Purva, Ashutosh. Good afternoon everyone. So let's start the revision. Revision start करते हैं बच्चों. गुड आफ्टरनून भारत, आदर्श, आदिश्री. ठीक है बच्चों, बाकी गुड आफ्टरनून रिवीजन के बाद. सो फर्स्ट वी डिस्कस कंसेंट. Consent means when two persons are agree on the same thing in the same sense, that is called consent, right? And in legal frame it is called consensus ad idem, right? And when there is no consent, there is no contract. अगर consent ही नहीं है तो वो contract होगा ही नहीं. Free consent, consent defined हो गया. Then free consent section 14, consent is defined in section 13. Free consent when the consent is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Means consent is not affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion क्या है? एक physical torture, committing or threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code. कुछ ऐसा काम करना या काम करने की धमकी देना जो इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है. सेकंड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. अनलॉफुली किसी प्रॉपर्टी को कब्जा करना या कब्जा करने की धमकी देना. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the party whose consent was so caused. It means the contract is voidable at the option of the parties whose consent is affected by the coercion by other party. Second point, person to whom money is paid or thing delivered under coercion must repay or return. Burden of proof किसके ऊपर होगा? The person who says there was a coercion. Threat to commit suicide is coercion, ये हम डिस्कस करते हैं. Undue influence, in coercion there's physical torture, and undue influence, that is the moral torture. One party is in position to dominate the will of other and the party takes the unfair advantage of the relation. Contract क्या है? Voidable है at the option of the party whose consent was caused by undue influence. The contract will be cancelled, but if the party has taken a benefit, then contract will be completed as per the conditions decided by the court. Burden of proof किसके ऊपर है? Who says there was an undue influence. Fraud, 5 acts for fraud section 17 में.
knowingly making a false suggestion, active concealment of fact, promise without any intention to perform any other act fitted to deceive, act or omission declared by law as 5 point है. Essential, there must be representation and that must be false. That statement must be made willfully, जानबूझ के किया जाए, with intention to deceive the party, धोखा देने के उद्देश्य से, and other party actually deceived and suffered a loss. ठीक है. Silence amounts to fraud only in 2 cases, when there is duty to speak and silence equal to speech. Consequences, the party can resign the contract, or party can insist for the genuine performance, or party can sue for damages, that is compensation. Note, if party takes any benefit, contract is not void. Misrepresentation यानी कि fraud but innocently. Misrepresentation क्या है बच्चों? अनजाने में कोई गलती, fraud करना, धोखा देना. Party makes a representation and that is false, but misrepresentation must be made innocently, without any intention to deceive the other party, but other party has actually acted on that false statement. Consequences are same as that of fraud, except point number 3. 2 are same, but point number 3, that is compensation, are not evident. Mistake, section 2022, mistake of law of country, mistake of law of foreign country. In case of mistake of law of country, contract is not voidable, it is valid. In case of mistake of law of foreign country, the consequences are same as that of a bilateral mistake, that is contract is void. Bilateral mistake, when both parties are under mistake, contract is void. Unilateral mistake, when only one party is under mistake, contract is not void, not void. It means contract is perfectly valid. Unlawful object and consideration, section 23. Agreement to do something forbidden by law, or agreement which defeats the provision of any law indirectly. Agreement which is fraudulent, means purpose is to fraud. Agreement which involves or implies injury to the person or property of another, if court regard the agreement as immoral, or contract which is opposed to public policy. Now, what are the cases of opposed to public policy? Agreement of trading with enemy, agreement of stifling prosecution for process में interfere करना. Maintenance and champerty, remember, interference with courts of justice, marriage brokerage, interest against obligation means demanding against the duties, agreement for sale of public offices, public office means public post or award, agreement tending to create a monopoly. These all are opposed to public policy. Void agreements by incompetent parties under mutual mistake of fact. Consideration is unlawful, fully or in part, without consideration, restraint in marriage, except child marriage, restraint of trade, except sale of goodwill and partnership agreement, restraint in legal proceedings, meaning of which is uncertain, wagering agreement, agreement contingent on the impossible event or to do impossible act. These all are void. So please prepare the sheet. Good afternoon, Bharat, Adishri, Purva, Ayushi, Bothra, Harshita, Ritu. Good afternoon, everyone. So please prepare this test sheet and please don't send the answer. This is just bit of self-assessment test. ठीक है, आपको अपने आप को चेक करना. आगे बढ़ते हैं बच्चे. Today's guest is Doraemon and he is saying hello to the future chartered accountants. Fiduciary relationship होता है बेटे relationship of faith. I think this is covered in undue influence. So let's start.
First question. In case there is an error, there's error in the consensus, the agreement is void, valid, voidable, unlawful. The answer is, in case there is an error in the consensus, the agreement is void. Next question. Which of the following involves criminal act forbidden by Indian Penal Code? Misrepresentation, fraud, coercion, none of these. The answer is, it is coercion. C. Next question. Domination. अच्छा, एक आशुतोष का क्वेश्चन आया सर, व्हाट इज द कॉन्सेंसस? बेटा स्टार्टिंग में बताया कॉन्सेंसस मींस कंसेंट, राइट? Domination of will is essential of the requirement of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. The answer is undue influence. Fourth, fraud is defined in section 15, 16, 17 or 18. The answer is section 17. Next. A fraudulently sold his car to B. Afterwards, B came to know about the fraud. But instead of complaining, he sold the car to C. In this case, B's right to resign the contract is lost, not lost, strength, none of these. Good afternoon, Mohammad Khan beta, but please don't send the answers. You need not to send the answer. Actually होता क्या है, शीट पूरी भर जाती है बीच में, और कई बार क्या होता है, जो क्वेरी रेलेवेंट होती है वो मिस हो जाती है. The answer is lost, क्योंकि third party has taken the benefit. Next. When both the parties to an agreement are under mistake about the existence of subject matter, the agreement is not void, void, voidable, valid. When both the parties to an agreement are under mistake about the existence of subject matter, the agreement is not void, void, voidable, valid. The answer is, bache, it is void, bilateral mistake. A agrees to pay rupees 5 lakhs to B if he procures some employment for A in income tax department. The agreement is valid, void, voidable, contingent.
The answer is it is void. Sale of public offices केस है ये. An agreement not to prosecute an offender or to withdraw pending prosecution is void, and it is known as agreement for maintenance, champerty, stifling prosecution. None of these. The answer is C. It is a case of stifling prosecution. Next. An illegal agreement is void. However, a collateral transaction to an illegal agreement, that is money borrowed to carry on illegal business, is valid, void, voidable, uncertain. ये आंसर गलत है बच्चों, ये void होगा, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये प्रिंटिंग में ये एरर है इसमें. अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो उसका जो कोलेट्रल होगा वो भी void होगा. void एग्रीमेंट का अगर कोलेट्रल होता है सपोर्टिंग तो वो वैलिड होगा, लेकिन इलीगल का अगर कोलेट्रल होगा तो वो void होगा. इट शुड बी बी. प्लीज करेक्ट. Last question. A agrees to pay a certain sum of money to B, a rival shopkeeper, if he closes his business in A's locality only. This agreement is valid, void, voidable, none of these. It is a case of creating monopolies. Agreement answer is void. अब मैं आप लोगों की प्रॉब्लम लेता हूं बच्चों. Manish is asking, I think this was the question number. एक सेकंड बच्चों, मैं देख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है ये. ये वाला 5th क्वेश्चन. तो मनीष की प्रॉब्लम है 5th क्वेश्चन में कि सर थर्ड पार्टी हैज द राइट टू सू बी who sells the defective car to C. So this is regarding the contract between B and C, and in that case C has right to file the suit against B if B has made a fraud. Pratibha is asking, sir, what is the meaning of prosecution? Just like कह सकते हैं कि सजा मिलनी है, उसका जो केस चल रहा है, सजा का डिसीजन लेना, that is called prosecution. 7th question. 7th क्वेश्चन ये है बेटा, आपको जॉब अरेंज करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो ये तो हो गया सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस का केस हो गया, तो ये वॉइड हो जाएगा. पूर्वा एंड राज, इन दोनों की क्वेरी सेम है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल मतलब सपोर्टिंग. जैसे फॉर एग्जांपल वेगरिंग एग्रीमेंट है, इट इज वॉइड एग्रीमेंट. अब वेगरिंग एग्रीमेंट में भी कमीशन का या कुछ और कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए, वेगरिंग के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, याद है तुम लोगों को, ए और बी वाला केस लिया था, सी में हमने सी को पैसा रखवाया था. तो दीज आर द collateral transaction. Collateral contract are those which are supporting. Main contract is different. So 2 rules you have to consider, if you have to understand. One is, if main contract is legal and collateral is void. If main contract is illegal, then collateral is void. If main contract is not illegal but void, then collateral agreement is valid. इतनी बात. Okay. Ritu saying, sir, today I got 10 on 10. Congratulations, beta. Question 8 और कह रहे हैं मोहम्मद. बेटे, I have discussed this. एक बार आप रीड करना स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, तो you will get the answer, right? अभी 10 पे आ रहा हूँ. ये हो गया क्लियर.
चैम्पर्टी बेटे आई हैव प्लीज एक बार रिवाइज करना। चैम्पर्टी होती है, क्या होता है कि हम किसी को सपोर्ट करते हैं किसी फेक केस में और उससे ये कॉन्टेक्ट करते हैं कि जो भी आपको मिलेगा उसको हम शेयर करेंगे, राइट। अभी 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चे, रुक जा, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या क्वेरी है बच्चे की? A agrees to pay certain sum of money to B, a rival shopkeeper, if he closes business। बेटा ये तो मोनोपोली, आप ये कह सकते हैं ये वाला कि आप दो चीज कह सकते हैं, रेस्टोरेंट और ट्रेड भी कह सकते हैं, मोनोपोली वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टिफलिंग प्रोसीजर बेटा मैं डिस्कस कर चुका है आयुषी, एक बार आप प्लीज चेक करो, पढ़ते क्लियर हो जाएगा। कशिश सेइंग सर आई ऑल आर करेक्ट, ओके, आई थिंक काफी बच्चों के करेक्ट है। मनमोहन बेटा मैंने 8 डिस्कस कर लिया अभी आपके सामने ही। ऋतु 10th में तो बहुत सिंपल है कि एक दुकानदार दूसरे से कहा कि भैया आप अपनी दुकान बंद कर दो, तो ये रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड भी है, और अगर केवल 2 ही दुकान है तो क्रिएशन ऑफ मोनोपोली भी है, ठीक है। और क्या रह गया? मिस वेंकटलक्ष्मी इज आस्किंग सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइज लॉ? सर जस्ट ए पीस ऑफ एडवाइस आई नीड, प्लीज गाइड मी। ओके, सबसे बढ़िया द बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम। दिमाग बिल्कुल खाली, brain is बिल्कुल empty and everything is you can fit in the brain। चलो बच्चों टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज की यूनिट है हमारी 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई और क्वेरी बची हो तो बता दो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स द कंप्लीशन ऑफ द ड्यूटीज required as per the contract। Means if there is a contract between A and B, A saying the contract between A and B that A will sell his car to B for rupees 2 lakh। Now in this contract A has to give the car and B has to give the money। When A gives the car, so it means A has performed his duty। When B gives the money, it is said then B has performed his duty। क्लियर इतनी बात? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बच्चों, ए ने बी को अपनी कार बेचनी है 2 लाख रुपए की, तो ए कार देगा बी को और बी देगा 2 लाख रुपए ए को। तो परफॉर्म मतलब क्या है कि जब ए अपनी कार बी को दे देगा, इसका मतलब ए ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। जब बी 2 लाख रुपए दे देगा, इसका मतलब क्या है कि बी ने अपना परफॉर्म कर दिया, राइट। अब अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ देयर इज नो परफॉर्मेंस बाय पार्टी, देन पार्टी विल बी पनिश्ड, कॉम्पनसेशन विल बी क्लेम्ड, ठीक है। तो ये चीज तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बट टुडे फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द एनी पार्टी इट विल बी पनिश्ड, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। Now, meaning of performance means carrying out his obligation। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारियां ली थी आप लोगों ने, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें तो कहा जाएगा आपने अपनी चीजें परफॉर्म कर दी। आदित्य saying sir what is the executed and executory? I've discussed beta, when both parties have performed is called executed, when both the parties have yet to perform it is executory, right। आगे बढ़ते हैं बच्चे। What are the types of performance of contract? Law says there are 2 types of performance। First is actual performance। See the example। X agrees to sell his watch to Y for rupees 50,000 and X delivers the watch and Y makes the payment। It means both the parties have made their performance।
that no parties will be liable. Clear इतनी बात? So what is section 37 says? When all the parties fulfill their obligation under the contract, it is called performance of actual performance. Tender performance, offer to perform. So what is it? Listen. Tender performance means, listen the example, then we will discuss the provision. P promises to deliver certain goods to R. P takes the goods to the appointed place during the business hours, but R refuses to take the delivery of goods. क्या हुआ इस एग्जाम्पल में कि there was a contract between P and R, and P has to deliver the goods. P takes the goods at appointed place during business hour, but R refuses to accept the delivery. ठीक है? P और R के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें P को कुछ गुड्स डिलीवर करना था R को, राइट? P ने गुड्स अपॉइंटेड प्लेस पर लाके रख दिया, लेकिन R ने डिलीवरी लेने से मना कर। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो P ने परफॉर्म नहीं किया. In this example, P has not performed just because of R. But in this case, there was no fault by P. So P should not be punished. Even the performance was not done. P ने अपनी बात कही, परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाया क्योंकि R ने मना कर दिया. पर P की गलती नहीं है, और जब गलती नहीं है तो पनिश भी नहीं होना चाहिए. तो लॉ ने कहा, then law said this type of performance, when one party offers to perform but other party is not interested to receive the performance, then it is called tender or performance or offer to perform, and this is equal to actual performance. It means in this case, in case of tender performance, the party who is making the offer to perform will not be punished even there was no actually performed. लॉ ने कहा कि टेंडर परफॉर्मेंस केस में जो पार्टी ऑफर कर रही है वो पनिश नहीं की जाएगी इवन परफॉर्मेंस एक्चुअल में नहीं. क्लियर इतनी बात? तो प्रॉमिस, टेंडर परफॉर्मेंस, promiser offers to perform his obligation under the contract at the proper time and place, but the promisee refuses to accept the. क्लियर इतनी बात बच्चों? Aditya is asking, sir, tender performance is same as unilateral contract. You may say unilateral contract because one party has performed if, in this case, R has making the payment, R has made the payment. तो depend करता है situation पर बेटा. ठीक है? अब clear हो गया? Actual means actually perform, tender performance means offer to perform, but actually not. ठीक है? Now, condition to be satisfied for a valid performance. What are the condition? क्या ऐसी चीजें हैं जो परफॉर्मेंस करने के बाद भी होनी चाहिए तभी परफॉर्मेंस वैलिड माना जाएगा, वरना परफॉर्मेंस ऑफर होने के बाद भी वैलिड नहीं है. तो लिसन, इट मस्ट बी अनकंडीशनल. परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. सी द एग्जांपल नंबर 3. X offers to Y the principal amount of loan. This is not a valid tender since the whole amount of principal interest is not offered. This example in short, actually what is the example? Let's say X has taken a loan from Y on some interest, but at the time of repayment, X just offer only the principal amount, not the interest. He so told, I will not pay the interest. So this is not a valid offer to perform, because X must repay principal plus interest. Clear इतनी बात? Mr. Raj Viswas is asking, sir, whether P can P sue R? P can file the suit against R? Definitely yes. अगर कोई P को नुकसान होता है तो वो claim कर सकता है. Definitely. Law says performance must be made at proper time and place. Now, what is the proper time and place?
नॉर्मली द प्रॉपर टाइम प्लेस का मीन्स है बिजनेस प्लेस एंड बिजनेस आवर्स। जो बिजनेस आवर्स होते हैं उस पर और जो बिजनेस प्लेस होता है उस पर हमें परफॉर्म करना है, राइट। लेट्स सी इफ द प्रोमिसर वांट टू डिलीवर द गुड्स एट 1 AM, रात को 1 बजे परफॉर्म करना है, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर अनलेस इट वाज सो एग्रीड। बट इफ दे एग्रीड, अनलेस सो एग्रीड मतलब है if both the parties agreed the delivery must be made at 1 AM, then it is valid. But if it's not decided, it should be performed in the usual business hours. Clear? A reasonable opportunity to examine the goods. It means when the person receives the goods from the other person, then he have the opportunity to check whether the goods as per the condition decided in the contract. जब आपको कोई गुड्स ऑफर करता है तो ये आपका राइट है आपकी, आप इसे चेक करो कि जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग गुड्स आया है या नहीं, राइट। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 5। A contracts to deliver B at his warehouse on 1st March 2021 1000 bales, bales means bundle, 1000 bales of cotton of a particular quality. A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed date under such circumstances that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the time offered is cotton, the thing offered is cotton of the quality contracted for and they are 1000. क्या क्वेश्चन एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चे। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में कि ए डिलीवर करेगा बी को 1000 बंडल इसके कॉटन के। तो बी ये चेक कर सकता है कि भैया ये गुड्स जो आया है वो 1000 ही है कि नहीं, क्वांटिटी सेम है कि नहीं है, जो क्वालिटी का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो है कि नहीं। तो actually you can say the other party has opportunity to check the goods whether it is as per the contract or not. Ashwin is saying sir first condition it must be unconditional. देखिए जो आप क्वेश्चन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि when you are doing to perform, so you must perform as per the terms and condition given and decided in the contract, nothing else. At the time of performance, if you are asking another condition, that should not be considered. That in that case, the performance is not valid. भाई जो आप जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय वही कंडीशन पे आप परफॉर्म करना है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई। परफॉर्मेंस के समय आप कोई एडिशनल कंडीशन डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आदित्य सेइंग सर चेक करने का वेदर गुड्स आर इन प्रॉपर क्वालिटी और इन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, it must be for whole obligations. See the example, then I will discuss the consequences. Example number 6. A promises to deliver 100 bags of rice on a certain day, but if on the agreed day and place A offers to deliver 100 bags only, this is not a valid. A ने प्रॉमिस किया था 100 बैग को सप्लाई करने का चावल के, लेकिन उसने 80 सप्लाई किया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर at this place I think I should tell you the consequences of in this situation. Example number 6. In example number 6, the contract was for supply 100 bags, but actually it was only 80 bags. So what is the consequences in the hand of other party? I think this example will also be discussed in the Sale of Good Act 1930. ये वहां भी डिस्कस किया जाएगा आपसे, और मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक चीज कि मान लीजिए ए ने 100 बैग के लिए कहा 100 सप्लाई करूंगा बी को, लेकिन उसने केवल 80 बैग सप्लाई किए या ऑफर कर रहा है। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? इन दैट केस बी हैज 3 ऑप्शंस। फर्स्ट, he accept 80 bags only and ask for supply of 20 bags.
he accept 80 bags only and then ask for supply of 20 bags. Second option, he accept 80 bags and reject the 20 bags. And third option, he reject all the 80 bags. तीन ऑप्शन है बी के पास, 80 बैग एक्सेप्ट कर ले और बी कहते भैया 20 और भिजवा देना। दूसरा ऑप्शन, 80 एक्सेप्ट कर ले और 20 के लिए मना कर दे। तीसरा ऑप्शन वो 80 के 80 मना कर दे। राइट, एक क्वेश्चन, दो लोगों की क्वेरी आई है अभी मेरे पास, रितु तिवारी और सुनील शर्मा। सेम क्वेरी, सो व्हाट इज द टेंडर एट दिस प्लेस? टेंडर मींस ऑफर, राइट? ऑफर टू परफॉर्म इज टेंडर परफॉर्मेंस एट दिस प्लेस. It must be made to the promisee or his duly authorized agent. However, a tender may be made to any one of the joint promisee. Please listen. It must be made, यानी कि performance can be offered to the promisee or his agent. But in case of joint promisee, it means promisee are more than one. Then offer can be given to any one promisee. अगर एक से ज्यादा promisee हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए जो ऑफर जाएगा वो किसी एक को किया जा सकता है. दैट इज वैलिड परफॉर्मेंस. टेंडर मस्ट बी, Ritu is saying, sir, this contract will be voidable. I think she is talking about example number 6. This contract is maybe, this question, example number 6, the contract is definitely voidable. Tender must be of exact amount and must be in legal tender. Exact amount means this is for in case of foreign currency transaction. Law says कि if the contract is entered in that currency, the performance should also be in that currency. In which currency the contract was entered, performance should be in that currency. कि भैया अगर foreign currency contract है तो उसी currency में होना चाहिए जिस currency में आपने क्या किया है, contract किया है, आपने उसी में perform करना है, right? It should not be in any other form such as check. बेटे अक्षता कानितकर, आपके साथ मोबाइलों की दिक्कत आ रही है, आपके यहाँ से मैसेज लगातार आ रहे हैं, ब्लैंक मैसेज, प्लीज चेक कर लीजिए, आपके शायद इसमें कोई एरर है आपके डिवाइस में. हाँ ठीक, रितु ठीक है, आपका मेरा भी यही आंसर है आपके एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म. कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? Promiser himself. Where the contract involves personal skills, then contract must be performed by the promiser. Example number 7C. A promises to paint a picture for B. A must perform his promise personally. कोई और उसे perform नहीं कर सकता. Agent. Where the contract does not involve personal skill, the skill of consideration, the promise may employ a competent person to perform. It means where the personal skills are not required, an agent may be appointed. A promises to deliver 100 kg
of rice to B, A may personally deliver it or he may employ some person to deliver the same. भाई गुड्स डिलीवर करना है तो ये खुद भी कर सकता है और किसी और के द्वारा भी किया जा सकता है. Legal representative in case of death of the promiser, the legal representative must perform the promise unless a contrary intention appears from the contract. Means अगर डेथ हो जाती है तो रिप्रेजेंट लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे परफॉर्म कर सकता है. बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, देन इन केस ऑफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंड. अगर पर्सनल स्किल चाहिए, जिसकी डेथ हो गई उसी पर्सनल स्किल चाहिए थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. See the example number 9. A promises to paint a picture for B by certain day. A dies before that day. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. Third person. Again, normally third person is cannot perform, but if the third person performs and the promisee accept the performance, then it is valid. When promisee accept the performance of promise from a third person, he, B nahi hai, it is not B, it is he cannot afterwards enforce it against the promise. See the example number 10. A owes B rupees 5,000. C pays to B rupees 1,000 and B accept them in satisfaction of his claim on A. The payment is discharge of the whole. A ने 5,00,000 रुपए लिए थे, C ने 1,000 रुपए दिए और B ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिए पूरे लोन के लिए. दिस इज कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जॉइंट प्रोमिसेस. इससे पहले एक क्वेरी है बच्चों, रितु की क्वेरी है, रितु कुमारी. सर कैन यू एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 5 वंस अगेन. पॉइंट नंबर 5 इज जस्ट फॉर फॉरेन करेंसी. इसका मतलब ये है बेटा, दिस मींस if the contract was entered in the dollar, the performance should be in dollar. You cannot say the price has been changed in rupees and dollar, the exchange rate has been changed. In which currency the contract is entered, the performance should be in that currency, right? Ritu Tiwari is asking, sir, anybody can deliver the rice. I think should be a person, capable person. वो कह रही हैं कि सर क्या कोई भी डिलीवर कर सकता है चावल को. कैपेबल तो होना चाहिए. एक 10 साल के बच्चे को हमने बोला भैया 50 किलो चावल जाकर डिलीवर करिए, पॉसिबल ही नहीं है. कैपेबल पर्सन. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 10. बेटे वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 10. ए ने 5,000 रुपए लिए और सी ने उस पेमेंट ए ने बी से 5,000 रुपए लिए थे, लेकिन सी ने बी को 1,000 रुपए दे दिया उस पूरे लोन के एवज में, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर अब बी ए से क्लेम नहीं कर सकता. राइट. नाउ द केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस. एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं है, सीधा 12 आ गया. 11 ऐसा नहीं है कि 11 कहीं खो गया है, गलती से प्रिंट हो गया. जॉइंट प्रॉमिसर. When 2 or more persons have made a joint promise, then unless the contrary intention appears from the contract, all such person must jointly fulfill the promise. If any of them dies, his legal representative must jointly with the surviving promisers fulfill the promise. If all of them die, the legal representative of all of them must fulfill the promise jointly. बहुत सिंपल है भाई, सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि अगर कई लोगों ने मिलके जॉइंट प्रॉमिस किया हो किसी से, तो वो सारे लोग मिलके उसको परफॉर्म करेंगे. अगर किसी की डेथ हो जाती है उनमें से, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सारे मिलके परफॉर्म करेंगे. अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म. सी द एग्जाम्पल नंबर 12. A promises to B to pay rupees 1,000 on delivery of certain goods.
A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money B. If A dies before the time appointed for payment, the representative must pay the money or employ some other person to pay the money. If B dies before the time appointed, B's representative shall be bound to deliver the goods and A is bound to pay rupees 1000 to B. ये एक simple example है, but you may take the example for more than one promises. This is important. Listen, one thing you must know that in case of joint promises, in joint promise, liability is several and joint, but rights are always joint. I'm taking an example. Three students, let's say A, B, C, comes to me, sir, please teach us law, mercantile law for CA Foundation. And I ask for the payment of fees of 30,000 jointly from the three. Now, in this case, three persons are one side, three joint persons are one side, and one is other side. What are the rights of their three persons? Teaching, getting study from me. And what are the liability of that three persons, ABC, to make the fees? Now, right is joint. It means anyone cannot ask me to teach. They all three jointly ask me to teach. But right and liability make the payment, and it means I can demand the payment of fees from anyone, either A, either B, either C, and he has to make the payment. Although he can get the shares from B and C, but he has to pay. He has to pay. So the liability is joint and several. Joint and several means he is personally liable, but and also joint, it means it can share the contribution. एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. मेरे पास 3 बच्चे आए ABC पढ़ने के लिए, सर आप हमें लॉ पढ़ा दीजिए. मैंने कहा ठीक है, मैं आप तीनों से मिलकर 30,000 रुपए फीस चार्ज करूं. अब जो बच्चे हैं दे आर कॉल्ड जॉइंट प्रोमिसेस. उनके राइट क्या है? मुझसे पढ़ना. और लायबिलिटी क्या है? फीस पे करना. राइट. राइट्स इज ऑलवेज जॉइंट, यानी कि वो मुझसे पढ़ने की डिमांड जब ही कर सकते हैं जब वो तीनों साथ में, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि राइट उनके जॉइंट है. दूसरी बात, लायबिलिटी उनकी सेवरल भी है, जॉइंट भी है. इट मींस मैं किसी एक से पैसे की डिमांड कर सकता हूँ फीस की, और उसको पे करना पड़ेगा. सपोज मैंने ए से कहा भैया आप दो फीस में तो पूरी की पूरी, तो ए को पे करनी पड़ेगी. लेकिन ए, बी और सी से कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है. तो लायबिलिटी सेवरल भी है और जॉइंट. ठीक है. एक सेकंड बच्चों, क्वेरी ले रहा हूं मैं. Aditya is saying, Aditya Darshan is saying, sir, but remaining 4,000 will be claimed under third person situation. No, the example is that B has accepted 1,000 in against the full loan, complete liability. 1,000 रुपए उसने पूरे 1,000 रुपए पूरे 5 ईयर के एवज में एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो अब बी क्लेम नहीं कर सकता. लोन का जो लायबिलिटी जो खत्म हो गया. आयुषी सेइंग सर थर्ड पर्सन वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा देंगे. ओके. देखिए थर्ड पर्सन वाला पॉइंट बताया था मैंने कि थर्ड पर्सन अगर परफॉर्म करता है और प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करता है तो परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाएगी. प्रोमिसी बाद में प्रोमिसर से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बेटे देखो अगर किसी की डेथ हो जाती है जो उसका वारिस होता है उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. यश is asking sir, if there is no written agreement that they are joint and later when A dies
other refuses to B that there were with A, then whether B can sue them or not, or it will lose to B. देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है मुझे कि सर अगर रिटन नहीं है, देखिए लॉ ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटन, राइट। अब प्रूव करना है वो आपको करना पड़ेगा, जिसने ये कहा, जो भी क्लेम करेगा उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एविडेंस, इसलिए एविडेंस के वजह से ही हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन, ठीक है। तो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, devolution means passing over from one person to another. When two or more persons have made a joint promise, they are known as joint promisors. Unless a contrary intention appears from the contract, all the joint promisor must fulfill jointly. If any one of them dies, his legal representative must jointly with the surviving promisor fulfill the promise. If all of them die, the legal representative, all of them, must fulfill the promise jointly. I think we have already discussed this point. Next point, rules regarding the performance of joint promise are. See, what are the rules? Any one of the joint promisor may be compelled to perform. I have discussed, it means the liability of the joint promisor is several or joint. See the example. A, B, and C jointly promise to pay D rupees 3,000. Now D may compel either A or B or C or any two of them to pay him rupees 3,000. Clear है बच्चों इतनी बात? Ritu is asking, Ritu Kumari is asking, sir, if B and C refuses to pay, then A can pay 30,000. Yes, A can pay. Sir, Raj is asking, sir, if one student leaves, are other two students entitled to get teaching? No, because the contract was joint. In this case, one student may give the permission in writing. Yes, sir, I am okay. I will not be attend the class. Please teach as per your schedule. तो तब हो सकता है. Next, right of contribution. A, B, C are under a joint promise to pay rupees 3,000. A is compelled to pay the whole. A can recover rupees 1,000 each from B and C. I have discussed it already. एक बार पढ़ लीजिए please. अब important note है. Important note. I think एक बच्चे की query भी solve हो जाएगी इसमें. If any one of joint promisor make default in such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal share. See the example. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब what is the meaning? See, if in example number 14, example 13, D has demanded 3,000 from A. Now A can claim 1,000 from B and 1,000 from C, right? D ने A से पूरे 3,000 रुपए ले लिए. अब A 1,000 रुपए B से और 1,000 C से क्लेम कर सकता है. इतनी तो बात क्लियर है. मान लो C दिवालिया हो गया, मर गया, मना कर दी पैसे देने से. Let's see the situation. C has made the default and make the payment. He is dead, he is denied, he become the insolvent. What may be the reason? But C is not capable to pay rupees 1,000. Then is a loss of 1,000, which will be borne by A and B. It means now A can claim 1,500 from B in place of 1,000. C ने मना कर दी 1,000 रुपए देने की, तो 1,000 का जो नुकसान हुआ C का, वो कौन बियर करेगा? A और B. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? A कैन क्लेम, A कितने क्लेम करेगा C से? B से 1,500 खुद बियर. ठीक है. रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, ये एक अच्छा पॉइंट है.
सर जॉइंट प्रोमिस तो डिमांड परफॉर्मेंस जॉइंट है या सेवरल? देखिए मैंने वही बताया, राइट जॉइंट है, लाइबिलिटी सेवरल एंड जॉइंट। पहले एग्जांपल नंबर 15 देखिए, देन वी कम टू द प्रोविजंस। A, B and C jointly promised to pay 9 lakh to D, but D released A from liability. D has said, I will not demand the payment from A. D released A. But what happened? A is released by D, not by B and C. But B and C will be liable and A is liable to B and C. A, B, C तीनों ने मिलके 9 लाख रुपए देने थे डी को, और डी ने कहा भाई साहब मैं ए से कह दिया कि जा तुझे आजाद किया, जी ले अपनी जिंदगी, मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा, राइट। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, ए रिलीज हुआ, बी और सी रिलीज नहीं हुए, लेकिन ए को रिलीज डी ने किया है, बी और सी ने नहीं किया है। तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? सी, B and C remain liable to pay the entire amount of 9 lakh to B, and though A is not liable to pay to D, but he remains liable to pay B and C. That is, he is liable to make the contribution to the other joint. यानी कि A से पैसे क्लेम कर सकते हैं B और C। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 लाख रुपए बी और सी से किसी से मांग लिए, तो बी और सी ने मिलकर क्या किया, 4.5 लाख लेके डी को दे दिए। लेकिन ए को रिलीज डी ने किया था, बी और सी ने नहीं किया, तो बी और सी मिलके उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं ए से, यानी 1.5 लाख बी क्लेम करेगा ए से और 1.5 लाख सी, राइट। When two or more persons have made a joint promise, a release of one such joint promise by promisee does not discharge the other joint promiser or promiser from the liability. The released joint promise is responsible to the other joint promiser or, ठीक है। एक बीच में क्वेरी ले लेता हूं बच्चे आपकी। बी पॉइंट किसकी क्वेरी थी? ये ऋतु की। देखिए ऋतु, इसमें क्या है कि अगर एक लाइबल होता है बेटे, if any one is liable to pay, he can claim the contribution. In example number 14, A has made the payment of 3,000, but actually the liability is 1,000 each. So A can claim 1,000 each from B and C, right? Yash is asking query from Yash. Sir, if D reduce, I think you are talking about this example, example 15. Sir, if D reduce the liability from 9 lakh to 6 lakh, even that, they all three are liable for 2 lakh each. यश कह रहे हैं कि भाई सर मान लीजिए कि ए ने डी ने लाइबिलिटी क्या करा, 9 लाख से घटा के 6 लाख कर दी, तब भी उनका लाइबिलिटी क्या है, जॉइंट एंड सेवरल, 2-2 लाख रुपए तीनों को लाइबिलिटी आई। क्लियर? Aditya is saying, sir, in this case, this happens only if the creditor is the best friend of one of the joint promisor. ठीक है, you are right, but what happened? What will happen? होता रहा दोस्त, कोर्ट तो दोस्त नहीं है किसी की, पेमेंट तो बेटा तुझे फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, पेमेंट you have to make. Devolution of joint right. When a person has made a promise to two or more persons jointly, these persons are known as joint promisees. Unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests with all the joint promises. All the joint promises. When one of the joint promisee dies, the right to claim the performance rests with the legal representative jointly with the surviving joint promisee. When all the joint promisee dies,
the right to claim performance rests with the legal representative joint. See the example. A, in consideration of rupees 5,000 lent to him by B and C, promises B and C to jointly repay the sum with interest on a specified day, but B dies. In such case, the right to demand the payment shall rest with B's legal representative jointly with C during the C's lifetime, and after the death of C, the legal representative of the B and C joint. तो बच्चों ये तो था पूरा का पूरा जॉइंट. तो इसकी मैं समरी आपको समझा रहा हूँ. आई थिंक आई एम टेकिंग द समरी ऑफ द concept of joint promises, and this will be sufficient for this concept. First thing, when two or more person make the joint promise, they are called joint promises or joint promise. ठीक है. Second thing, in case of joint promises, whether liable or whether has the right, whether liable or whether the right, if anyone dies, the legal representative will be liable or be having the right with others jointly. If all of them have died, the legal representative, all of them will be liable or having the right. क्या कहा मैंने? अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉमिस करते हैं तो क्या कहलाता है वो जॉइंट प्रॉमिस. राइट. जॉइंट प्रॉमिस के केस में सिंपल सा फंडा है, चाहे राइट्स हो चाहे लायबिलिटी, अगर परफॉर्म सबको करना मिलके, अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी के साथ मिलकर. राइट. अगर मान लीजिए राइट है तो भी यही होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी जॉइंट प्रॉमिसर जो सर्वाइविंग है उनके साथ मिलकर. अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो लायबल होंगे या उनका राइट. ठीक है. एक और, इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस द लायबिलिटी इज सेवरल और जॉइंट, बट राइट आर ऑलवेज जॉइंट. Any one of the joint promiser may be asked to make the payment, but he has right to claim the payment from other. He has right to claim the contribution from other. Joint promise के केस में, joint promise के केस में क्या कहा मैंने बेटे? joint promise के केस में liability several या joint होगी, but rights joint. ठीक है. यानी कि एक joint promiser से पेमेंट क्लेम किया जा सकता है, लेकिन वो बाकी से कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है. इतनी बात हो गई. मनीष, आप किस एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेटा? फॉर विच एग्जांपल यू आर टॉकिंग विद मनीष जैन? सर, इफ सी इज अनेबल टू पे, देन ए बी कैन रिसीव द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑफ ए फ्रॉम एज असेट. यस, डेफिनेटली राइट बेटा. Raj Viswas is asking, sir, if there is no legal representative. देखिए, no legal representative. देखिए, एक बात समझ लीजिए सब लोग. Legal representative is liable up to the estate of deceased person. जो आदमी मर गया है उसकी प्रॉपर्टी से ही लायबल होगा वो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने पास से कुछ नहीं देगा. मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो पर्सन डेथ हो गई, डिसीज पर्सन जिसे हम बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और उसकी लायबिलिटी 1 करोड़ 20 लाख की है. उस केस में लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव केवल 1 करोड़ चुकाने के लिए है, 20 लाख चुकाने के लिए नहीं बनते. क्लियर? स्वाति बेटा, प्लीज डाउनलोड द अपडेटेड एडिशन फ्रॉम द ICI, देन यू कंटिन्यू योर स्टडी. ठीक है. So, इस टाइम फॉर सुपर ओवर 1 स्टार्ट कर दें बच्चों. कोई और क्वेरी ना हो तो. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन. In case of death of promiser before performance, the representative of the promiser are not bound when it involves personal skill of the promiser
There is no such provision in the contract, either A or B, none of the above. Read the question carefully. In case of death of promisor before performance, the representative of the promisor are not bound. Second question. A teacher enters into a contract with a student to teach for the exam, but he dies before teaching. Now, legal representatives are bound to perform, become enforceable, voidable, contract comes to end. The right of joint promises to demand performance, right, is joint, several, joint or several, joint and several. मेरी बात याद रखना, जो दवाई मैंने लास्ट क्लास में दी थी वो आज भी एप्लीकेबल है. सारे क्वेश्चन एक साथ आने चाहिए बच्चे मेरे. In case of default by joint promisors, the promisee can sue any one of them for the entire promise. It is true, partly true, false, none of the above. Next. If any one of the joint promisor makes a default in making contribution, how will it be settled down by the other promisors? If any one of the joint promisor makes a default in making contribution, how will it be settled down by the other promisor? A representative of the promisor will be liable to contribution. Contribution will be dismissed automatically. Representative of promisor will be liable along with the other joint promisors. Remaining joint promisor will be liable to contribute. Listen, in this example, we are considering that there is no estate with the legal representative. यही मान के चल रहे हैं कि जो डिफॉल्टर है वो उस पर कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, जस्ट ही इज डिफॉल्टर. ही इज डिफॉल्टर ओनली, मरा नहीं है वो. ठीक है बच्चे. The performance of contract can take place by performance, tender performance, any of these, none. So this was the super over. चलिए भेजिए आंसर्स, तब तक कुछ के तो आए और डिस्कस करते हैं फिर आंसर्स. In case of death of promisor before performance, the representative of the promisor are not bound when it involves personal skills. Second, in this case, contract comes to end. Third, the right of joint promisees to demand performance is joint. Fourth, in case of default by joint promisor, the promisee can sue any one of them for the entire promise. It is a true.
If any one of the joint promiser makes a default in making contribution, how will it be settled down? देखिए इसमें क्या है रीजन, बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है. राइट आंसर इज डी. रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट जो आता है जब वो मर गया हो तो केवल डिफॉल्टर है, तो ए एप्लीकेबल होगा नहीं, बी विल बी डिसमिस, कॉन्ट्रिब्यूशन डिसमिस नहीं हो सकता, एंड सी विल नॉट बी एप्लीकेबल. द राइट आंसर इज डी. एंड लास्ट वन इज the performance of contract can take place by any of them, performance or tender performance. Let's see the answers. First person who has given all the correct answer is Mr. Sarthak Mohanty. Congratulations beta. तेजस आपने केवल 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं बेटा. नेक्स्ट वन अभी तक तो नाम आया नहीं मेरे पास. मिस सयाली धर्माधिकारी. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन. मिस्टर यश, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे. भारत ने लिख के भेजा, आंसर नहीं भेजा, लिखा भेजा सर ब्रेक दे दो. 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट. थक गए होंगे मुझे पता है. देन रितु तिवारी. ओके बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द स्टूडेंट हु हैव गिवन ऑल द करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है यश, मैंने आपका नाम बोल दिया बेटा, यश. ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, देन वी विल रीजॉइन. ठीक है, ओके, चलो 10 मिनट बाद मिलते हैं बच्चों. निसार जी.
ओके ओके बच्चों, एक क्वेरी थी आपकी मोहम्मद खान साहब की, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोल्यूशन? टुडे आई हैव डिस्कस्ड डिवोल्यूशन ऑफ राइट मींस कब राइट अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। एंड राज इज आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर डिफॉल्ट होता है जॉइंट प्रोमिजर से तो किसी एक से भी क्लेम कर सकता है, तो सही है। अगर एक आदमी डिफॉल्ट कर रहा है तो वो किसी एक से क्लेम कर सकता है प्रॉमिस, बाद में वो निपटेंगे आपस में, कैसे निपटेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो वी विल डिस्कसिंग हियर टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। किस टाइम पे होना है, किस तरीके से होना। सी, time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified, section 46. No application means apply नहीं करना, performance demand नहीं करना, और time specified नहीं। Law says whereby the contract a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for the performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. Means there was no condition that promisee will demand. After that promiser will perform, then promiser need not to wait. He just perform within reasonable time as time was not specified in the question. And reasonable time depends. The reasonable time is interrupted having regard to the facts and circumstances of the particular case. सेक्शन 46 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम नहीं दिया हुआ है परफॉर्मेंस के लिए, और ये भी नहीं कहा है कि सामने वाली पार्टी जब परफॉर्मेंस डिमांड करेगी तब परफॉर्म करना है, इस केस में प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करते बिगर प्रोमिसी के कॉल का वेट करे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, time and place for performance of promise where time is specified but no application to be made, section 47. कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट प्रोमिसी मस्ट डिमांड देयर आफ्टर द प्रोमिसर मस्ट। ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि पहले प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, पहले प्रोमिसर डिमांड करेगा, उसके बाद ही प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। ये अगर मेंशन नहीं है, उस केस में क्या होगा, when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual business hours on such day and the place at which promise ought to be performed. यानी कि अगर टाइम एंड प्लेस में स्पेसिफाइड है तो उसी टाइम पे परफॉर्म करना है, रीजनेबल टाइम का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं, ठीक है। See the example number 17. A promised to deliver goods to B at his warehouse on 15th April. But goods could not be received since A offered after 8:30. The promisee may refuse to accept the delivery for the usual business hour over. देखिए एग्जाम्पल 17 में टाइम मेंशन नहीं है. In that case, it should be a reasonable time. In example number 17, there is no specific time. Then performance must be made within the reasonable time. And what is the reasonable time? Reasonable time is the official time, business time. ठीक है बच्चे? Third point, application for performance on certain day to be at proper time and place. Where a promise is to be performed on certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee,
It is the duty of the promisee to apply for the performance of a proper place and within the usual hours of the business. Listen, first you understand the words written in blue. Not undertaken to perform it without application by the promisee. Actually, in the section 48, these words are as it is mentioned. But what is the meaning of these words? Not undertaken to perform it without application of the money. यानी कि performance must be made only after the application by the promisee. इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्म उसी वक्त किया जाएगा जब वो डिमांड करेगा. देखिए मीनिंग समझिए ना. Try to understand the meaning. Not undertaken to perform, it means not to perform. Without application by the promisee, यानी कि only after the application of the promise. तो अगर परफॉर्म एक पर्टिकुलर डेट पे करना है और ये भी मेंशन है कि परफॉर्मेंस जब ही होगा जब प्रोमिसी उसके लिए अप्लाई करेगा. Then the duty of the promisee, now it is on the promisee to apply, to demand the performance at proper place and within usual hours of business. Day is specified, but time is not specified. In 48 section, day is specified, time is not specified. Therefore, time should be a usual business hour and day should be that which was decided in the contract. Section 48 में day तो decide हुआ है लेकिन टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, तो टाइम होना चाहिए प्रॉपर यूजुअल बिजनेस आवर्स. तो इस केस में प्रोमिसी की ड्यूटी है वो उस दिन डिमांड तो करे लेकिन यूजुअल बिजनेस आवर्स. ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है. प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस. Means section 49 क्या कहता है कि what is the place where no application to be made by the promisee and place was not fixed, then it should be a reasonable place. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to promisee to appoint a reasonable place and for the performance of the promise and to perform it at such place. A undertakes to deliver 1,000 kgs of jute to B on a fixed day. A must apply to B appointed reasonable place for purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. Means if place is decided, then at that place, not decided, a reasonable place. Performance should be in the manner or at the time prescribed or sanctioned by the promisee. Like कीजिएगा इसको, correction कर लीजिएगा बच्चों. Please correction. It is not promise. It is promisee. Section 50. Where the promisee has prescribed or sanctioned any manner or time of performance, it must be performed only in such manner and such time. अगर manner decide है तो उसी manner में perform करना है. Otherwise, remember the rules regarding acceptance should be in the in the mode prescribed. So performance should be in the mode prescribed. See the example. B owes A rupees 200,000. A desires B to pay the amount to A's account with C, a banker. B, who also banks with C, orders the amount to be transferred from his account to A's credit, and this is done by C. Afterwards, and before A knows of the transfer, C, the banker, fails. There has been a good payment by B. What is the example? A has taken a loan of 2,000 from A. A asks B to transfer the amount in his bank account. In that bank, C also has the account. C informed his request his banker to transfer the amount from B's account to A's account. Afterwards, bank fails. The performance was completed, even that the bank is failed. क्या केस है बच्चों? B ने A से 2,000 रुपए का लोन लिया
बी ने ए से 2000 रुपए का लोन लिया और ए ने कहा बी से कि भाई आप इसको मेरे अकाउंट में जमा करा दो, मेरा एक अकाउंट है सी बैंक में, राइट। उसी बैंक में बी का भी अकाउंट था। बी ने सी से कहा भैया तुम पैसा मेरे अकाउंट में जमा, मेरा पैसे मेरे अकाउंट से 2000 रुपए निकाल के ए के अकाउंट में जमा करा। ट्रांसफर हो गया अकाउंट, लेकिन बाद में बैंक फेल हो गई। जब बैंक फेल हो गई तो इसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की नहीं आएगी। बी की पार्ट पे तो परफॉर्मेंस हो गया क्योंकि बी ने तो उसी तरीके से परफॉर्म किया जिस तरह ए ने कहा, राइट। अच्छा, before starting the performance of reciprocal promise, when we talk about the time, place and manner, तो अगर हम इन चीज, if we talk about three things, time, place and manner, so I got the summary of this provisions that if the time is specified, then performance should be at that place. If time is not specified, then it should be reasonable. Place, if it is decided in the contract, performance should be a that place. If not decided, it should be a reasonable. Same thing for the manner. If manner is decided, then perform should be in that manner. If not, it's a reasonable. If it was given that promiser will perform only after the demand or application by the promisee, then performance will be done by that after that demand or application. So this is the summary. चार बातें हमें समझ में आई भाई, टाइम, प्लेस, मैनर, इन तीन के बारे में तो मैं ये कहता हूं कि अगर डिसाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके अकॉर्डिंग होगा, डिसाइडेड नहीं है तो रीजनेबल होगा। एंड रीजनेबल डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर क्वेश्चन में ये डिसाइड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि भाई परफॉर्मेंस जब ही होगा जब प्रोमिसी मांगेगा, तो प्रोमिसी के मांगने के बाद ही प्रोमिसर उसको परफॉर्म करेगा, अदरवाइज प्रोमिसर की लायबिलिटी नहीं। ठीक है। अब राज ने क्वेश्चन पूछा है, सर इफ द डेट इज मेंशन एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर लॉकडाउन, तो बेटे तो परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो गई ना, कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तो कैसे परफॉर्म होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा या कैंसिल होगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि जो परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता हो तो वॉइड हो जाएगा, और अगर लगता है कि अभी रोक लो, बाद में लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिवाइव कर सकते हैं, तो ये रिवाइव। Manish is asking, sir, reasonable place are office and home. First reasonable place normally is the official place, business place, and then residence. Okay. Now, performance of reciprocal promises. So what are the reciprocal promises? C. Promise in return of a promise. Promise के बदले में promise is called reciprocal promise. रितु इज सेइंग सर वॉइडेबल है। देखिए परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, एक्चुअली क्या है ना, अब लॉकडाउन सिचुएशन ऐसी आ गई कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, तो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। प्रियंका मान इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक फेल। बैंक फेल मींस बैंक इज नॉट कैपेबल टू पे द लायबिलिटी। बैंक में पैसा जमा कराया हमने, लेकिन बैंक पे पैसा ही नहीं देने के लिए। नॉर्मली बैंक क्या करती है, व्हाट बैंक डू, you deposit the money in bank and bank give it on the give it as a loan to the businessman and charge interest from them and pay the interest to you. बैंक क्या करती है, आपने पैसा जमा कराया, उस पैसे को लोन पे देती है, उससे ब्याज कमाती है, उसी जो ब्याज आई उसमें से कुछ पैसा निकाल के आपको ब्याज देती है। लोन पे ब्याज नॉर्मल 10% है, सेविंग पे कितनी है, 4%। अब बैंक फेल मतलब है कि बैंक रिकवरी नहीं कर पा रही है। टुडे द बैंक आर गवर्नमेंट बैंक, ऑल द बैंक्स आर मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, तो नॉर्मल दे आर नॉट फेल। ठीक है। तो रेसिप्रोकल मींस अ प्रॉमिस इज रिटर्न फॉर ए प्रॉमिस। Thus where a contract consists of promise by one party to do or not to do something in future in consideration of similar promise by the other party, it will be called a reciprocal promise. एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस आया, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सी types and rules. There are three rules for these promises. First, where the promise is mutual and dependent.
where the promise is mutual and dependent. In such a case, the performance of one party depends upon the performance of the other party. Thus, if the promiser who must perform fails to perform it, he cannot claim the performance of the reciprocal promise. On the other hand, it must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. लॉ के प्रोविजन ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है तो पहले को भी परफॉर्म नहीं करना है. पहले हम एग्जांपल देखते हैं, देन वी विल कम अगेन ऑन द प्रोविजन. सी द एग्जांपल. A contract with B to execute certain builders work for a fixed price. B supplying the necessary timber for the work. B refuses to furnish any timber and work cannot be executed. Now A need not to execute the work and B is bound to make compensation to A for any loss caused to him by the non-performance of the contract. See the example. कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में कि ए कुछ बिल्डिंग वर्क करेगा, लेकिन इसके लिए टिम्बर यानी लकड़ी बी प्रोवाइड करेगा. अब अगर बी लकड़ी प्रोवाइड नहीं करता है तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं है घर को बनाने, राइट. और अगर ए को नुकसान होता है बी के इस काम से, बी ने परफॉर्म नहीं किया, इस लकड़ी सप्लाई नहीं करी, ए को कोई नुकसान होता है, इन्हें सामान कहीं से रख लिया व्हाटएवर, तो ए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता. एग्जाम्पल 20 says A will, the contract between A and B. A will perform some building work and for that B will provide the timber, wood. But if B does not provide the timber, A is not liable to perform the work. But even A has got some loss, B is liable to pay. Clear बच्चे? Clear हो गया? Again आते हैं mutual dependent पर. अब read करिए. Please read. The performance of one party depends upon the prior performance of the other party. If the promiser who must perform fails to perform, he cannot claim the performance of the reciprocal promise. And on the other hand, he must make compensation to other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the. Clear बच्चे? Mutual and independent. They are not connected. C. In such case, each party must perform his promise without waiting for the performance or readiness to perform on the other part. See the example. X promises Y to deliver him goods on 10th July and Y in turn promised to pay the price on 6th July. There are two conditions. X will supply the goods on 10th and Y will give the money on 6th, right? But this was not mentioned in the contract that only on the deposit of money on 6th, X has to perform on 10th. Contract है X supply करेगा 10 जुलाई को and B 6 जुलाई को पेमेंट कर देगा इसका. लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि पहले पेमेंट आएगा 6 जुलाई को तभी 10th को परफॉर्म किया जाएगा. नाउ Y is paying the price is independent of X delivering the goods, and even if Y does not pay the price on 6th, X must deliver the goods on 10th July. Now, but B can of course sue, X can of course sue Y for compensation. Y ने परफॉर्म नहीं किया 6 तारीख को, the delay. X can claim the compensation in the form of interest on the price. ठीक है? Mutual and concurrent, same time, they both to be performed on the same time. In such cases, the promises have to be simultaneously performed. When a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promiser need perform his promise unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise. See the example. सेल ऑफ गुड फॉर कैश, यानी कि दोनों ही सेम टाइम पे परफॉर्म किए जाएंगे. व्हाट लॉ सेज
When contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promiser need to perform unless promise is ready. सामना रेडी नहीं है तो आप कोई परफॉर्म नहीं कर। क्लियर इतनी बात? Important thing. Reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. कुछ legal है and कुछ illegal है. Where person reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain things which are illegal, the first set of promise is contract but second is void. Legal वाला valid है, illegal वाला void. Clear मेरे बच्चे? See the example. A and B agree that A shall sell B a house for rupees 10,000. But if B uses it as gambling house, he will pay A rupees 50,000. The first set of reciprocal promise to sell the house and pay 10,000 is valid. There is a contract, but second part that is used as gamble house, it is invalid and void agreement. ठीक है? इसमें कोई क्वेरी बच्चों? एक क्वेरी है शायद आपकी, एक बच्ची क्वेरी है 56 सेक्शन। 56 सेक्शन तो बेटा अभी आया ही नहीं, वो तो इम्पॉसिबल चीजों के लिए था। एक बार आप देख लें बेटा, बहुत पीछे होगा वो तो, है ना। 57 हमने कर लिया बच्चे। नाउ appropriation of payment section 59 to 61. बट बेटे इस सेक्शन को करने के लिए बिफोर डिस्कसिंग द सेक्शन, क्वेरी आ गई बच्चे की 57 से पहले। ओके, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेटा डिस्कस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मींस promise against the promise. If they are mutual and dependent, first promise must be performed, then second is will be. If first is not performed, the second is not to be expected. ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। अगर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है तो पहला भले ही ना हो, दूसरे को परफॉर्म करना है और पहले के लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है। म्यूचुअल कॉन्करेंट जो साथ में परफॉर्म होने हैं, जैसे कैश सेल, तो अगर एक पार्टी तैयार नहीं है दूसरे को भी लायबिलिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक पार्ट लीगल है और दूसरा इलीगल है, तो अगर लीगल वाला पार्ट है तो वो वैलिड है और इलीगल पार्ट है तो वो इनवैलिड है। एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया कि ए और बी ने एग्री किया कि ए अपना घर बी को बेचेगा 10,000 रुपए में, और बी उसे अगर बी उसे एज ए गैम्बल हाउस यूज करता है, गैम्बलिंग हाउस, तो 50,000 लेगा। तो सेकंड पार्ट तो इनवैलिड है, फर्स्ट पार्ट वैलिड। ठीक है। Ayushi is saying, sir, on which page module the type and rules of performance of reciprocal promise? In your study module, reciprocal promise is given. I have just explained, bifurcated. ठीक है। Appropriation of payment, उससे पहले हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा बच्चे। इसको समझने से पहले we have to understand this example number 23. एग्जाम्पल है X sold goes to Y on different dates. First transaction was done on 10th March 2015 for 10,000 rupees. Now it becomes time barred on 21st. Second transaction was 1st January 2021 for 15,000. Third transaction on 3rd January rupees 8,000. 5th January 2021 for 10,000. And Y made the payment of
30,000 on 8th January. A question arises from which bill payment will be adjusted. Payment will be applied. Applied किसके अगेंस्ट वो अप्लाई किया जाएगा. 4 ट्रांजेक्शन हुए, 10,000, 15,000, 8,000, 10,000. 10,000 का तो टाइम बार्ड हो गया, 3 साल निकल गए. अब उसने इकट्ठा पेमेंट कर दिया वाई ने 30,000 का. 30,000 का इकट्ठा पेमेंट कर दिया. क्वेश्चन अराइजेस, ये 30,000 किससे एडजस्ट होंगे? 10 तारीख की पेमेंट से, 1 से, 3 से, 5 से. तो वो एडजस्ट करना, अप्लाई करना इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. द एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट द डिफरेंट बिल्स is called appropriation of payment. Section rules section 59 to 61 will be applied here. ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है. अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पर. देखिए क्या कहता है लॉ, सेक्शन क्या कहता है. When a debtor owes several debts to the same creditor and makes the payment which is not sufficient to discharge all the debts, in such case the payment is appropriated or adjusted as per section 59 to 61. Clear? Rule number 1. Where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him with express intimation, express information that the payment is to be applied to discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied to that debt. Rule 1 says, if debtor inform creditor, sir, I am sending 30,000 rupees and you have to adjust as per my direction, then if creditor accepting the payment, he must adjust it as per the instructions of the debtor. In the example, if Y says to X, sir, I am sending 30,000 and you have to apply what? You adjust 15,000 against the bill of 1st January and adjust 10,000 against the bill of 5th January and adjust 5,000 against the bill of 3rd January. Then in that case, if creditor is accepting the payment, he has to adjust as per the Y. क्या कहा मैंने? Y ने 30,000 भेजे और स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दी कि भैया ऐसा है, 15,000 तो एडजस्ट कर लो 1 तारीख के बिल में, 1 जनवरी के बिल, 5,000 कर लो 3 जनवरी के बिल में, 10,000 कर लो 5 जनवरी के बिल में. तो एक्स अगर इस बिल को, पेमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये रूल हो गया व्हेन एप्रोप्रिएशन मेड बाय द डेटर. क्लियर? इट मींस इफ एप्रोप्रिएशन मेड बाय द डेटर and creditor is accepting the payment, then he has to adjust as per the instructions of the debtor. Second point, second rule. Appropriation by the creditor. When debtor does not intimate and there is no circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply at his discretion to the lawful debt, lawful, actually due and payable to him, including time bar debt, but not for disputed debt. What is a disputed debt? Disputed debt means where both they are not agree. Let's say in the previous example, X sold the goods to Y on 15th, let's say 1st January, 15,000 rupees. But Y says to X, sir, out of 15,000, the goods worth rupees 5,000 was not as per the quality, that should be returned. So disputes are there, dispute. In that case, now what law says?
if debtor does not inform, intimate, then creditor can adjust against any debt, including time barred, but not against the dispute. अगर डेटर ने इन्फॉर्म नहीं किया है तो क्रेडिटर किसी भी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड, पर डिस्प्यूटेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं। इसका मतलब इस केस में Y has made the payment of 30,000. Now X can adjust against 10th January 2015. That is 10,000. Then as per his own view. इस केस में अगर Y ने 30,000 दिए हैं तो X को राइट है वो 10,000 जो टाइम बार डेप्ट है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते। थर्ड पॉइंट, इफ neither debtor informs and nor creditor, तो ना तो डेटर ने कोई इंफॉर्मेशन दिया ना क्रेडिटर ने किया, बस एंट्री कर ली। Debtor has not informed, creditor has not made the clear intention for against which debt he is adjusting the payment. He just made the entry that he has received 30,000 on 8 January. He received on 8 January, 30,000 on 8 January. Now FIFO will be applied. अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा है, क्रेडिटर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक एंट्री करके रख ली, तो FIFO will apply होगा, यानी कि अकॉर्डिंग इन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग टाइम बार। इस केस में क्या होगा बच्चे, 10,000 10,000 will be adjusted against 10th January 10th March 2015. 15,000 will be adjusted against the bill of 1st January 2021, and 5,000 will be adjusted against the bill of 3 January 2020. अगर दोनों ने कुछ नहीं कहा है तो FIFO अप्लाई होगा। तो जो Y ने 30,000 का पेमेंट किया है 8 जनवरी को, वो पेमेंट 2015 का जो बिल था 10,000 का उसके अगेंस्ट होगा, 1 जनवरी का 15,000 का बिल था उसके अगेंस्ट होगा, और 5,000 एडजस्ट होंगे 3 जनवरी के बिल के। FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस, so Manish is saying, sir, if the time of 3 years is over, that is time bar debt, then also debtor will adjust the payment on the time bar amount. तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर अगर टाइम बार हो गया डेटर भी एडजस्ट करा सकता है। यस, करा सकता है, उसके ऊपर है। आदित्य, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, प्लीज क्लियर करिए। आदित्य प्लीज क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क। ठीक है, तो व्हाट इज द समरी ऑफ द की जिस्ट ऑफ द टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। If debtor informed, then payment adjusted accordingly. If debtor does not inform, creditor can adjust against any debt, including time bar debt, but not against the disputed debt. Right? Third point, if no one says, then the payment will be adjusted as per the FIFO method, first in, first out, first in, first out, and even include फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंक्लूडिंग टाइम बार डेब्ट बट नॉट द डिस्प्यूटेड। ठीक है, डिस्प्यूटेड अगेंस्ट नहीं होगा, टाइम बार के अगेंस्ट होता है। क्लियर इतनी बात? अब कोई क्वेरी हो तो बताओ बच्चों फटाफट से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं सुपर ओवर। कोई क्वेरी नहीं आई बच्चे अभी आपकी? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। डिस्प्यूटेड डेब्ट मींस, बेटा श्रुति मैंने बताया था, डिस्प्यूट डेब्ट मींस जहां पर अभी क्लियरिटी नहीं है। एक्स ने गुड्स भेजा वाई को, वाई ने कहा सर गुड्स इज नॉट एज पर द क्वालिटी वी हैव डिस्कस्ड, तो डिस्प्यूट हो गया ना, तो इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, आदित्य सेइंग सर एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर। ठीक है, एक बार ले लेते हैं, चलिए आपकी बात भी। मान लीजिए इन दिस केस Y has not informed X about the adjustment of the payment.
then X has right to adjust against any debt, including time barred, but not the disputed. So in this case, X has right to adjust against even the bill of 10th March 2015. उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है. Ritu is saying the types and rules are not in the book. They are in your book, but I have made in partition. वो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं वही rules. ठीक है बच्चे. चलिए. First question. If no time is specified for performance of a contract, it must be performed within reasonable time, and reasonable time means which seems reasonable to the promiser, which seems reasonable to the promisee, which is determined as reasonable by the third party, when is reasonable under the facts and circumstances of the case. If time is the essence of contract, and the promiser fails to perform the contract by specified time, the contract becomes void, remains valid, becomes voidable at the instance of the promisee, becomes unenforceable. Next, in case of reciprocal promises which is not applicable, they can perform simultaneously, they cannot perform simultaneously, they can be fixed by the parties to the contract as depending upon the nature of contract. Normally reciprocal मतलब वही होता है तो मैं बता ही दूंगा आंसर, तो आपको बताना है. विच इज नॉट एप्लीकेबल, आपको ये फाइंड करना है जो एप्लीकेबल नहीं है, विच इज नॉट एप्लीकेबल. A and B contract that B shall build a house for A for rupees 9 lakhs. B is ready and willing to construct the house, but A prevents him from doing so. In this case, B can opt to resign the contract. B is entitled to recover the compensation for any loss suffered by him. Either A or B, both A and B. Reciprocal promises are made by both parties to contract. Promise made by promiser only, promise made by promisee only, none of these. Offer to perform a contract is called as attempted performance, caveat emptor, just in name, just in personam. ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट 1 आवर का. भेजिए बच्चों आंसर्स. चलिए आते हैं आंसर्स पर. Reasonable, which is reasonable under the facts and circumstances of the case. Contract becomes voidable. Third, not applicable.
B. They cannot perform because they can be performed simultaneously. A and B contract that B shall build a house for A 9,000. In this case, the right option is both B, A and B. B can opt to resign and also can claim the compensation. Reciprocal promise are promises made by both the parties to contract. This is the correct answer. This is called attempted performance. So let's see. First person who has given all the correct answer, Mr. Pramod K. Second one is Mr. Sarthak Mohanty. Congratulations both. Third, Miss Shayali Dharmadikari. Congratulations beta. एंड मिस रितु तिवारी. चलो भाई, सब लोगों को बधाइयां बहुत बहुत जिन लोगों ने पूरे आंसर सही दिए. तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4 इज कंप्लीटेड एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस यूनिट 4. कोई बात नहीं, जिनमें भी एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है कोई इशू नहीं है यार. पढ़ाई करो, रिवीजन करो, दैट विल बी बेटर. So thank you so much. I think I should say bye to all of you. Hopefully you enjoyed the law. हालांकि टाइम ऐसा है 2 to 4 इस समय तो खतरनाक टाइम होता है बच्चों के लिए, बट होपफुली एंजॉइंग. चलो बच्चों, लॉ को ऐसे ही पढ़ते रहो मजे मजे से, क्योंकि अगर आप जब सीए बन जाओगे तो आपको लॉ पता होगी, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे. जब आप लॉ ही नहीं जानते होंगे तो कैसे बनाओगे? आम जनता में और आप में फर्क क्या होगा कि वो लॉ नहीं जानते होंगे, आप लॉ जानते होंगे. तो लॉ को बनाओ, अच्छे से पढ़ो, एक प्रैक्टिस करो. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. बाय.